Hi everyone, welcome to my channel. So these are the packages of my haul that I have done from Nykaa Super Saver Summer Sale, and now let's start this unboxing video. Hi everyone, welcome to my channel. I am Samanita and this is my channel Makeup and Beauty. So yes, that was the first clip and now this is the another clip. I shoot two clips in 2 different days, and that's why the first clip makeup was very different from this clip. It's just because that I wanted to show you all the boxes of Nykaa, that how much I have shopped, and then I had to throw out these boxes because of this current situation. I am not storing all the boxes. So once I have done all the sanitizing part, I just take out all the products and I shoot that clip with those boxes, and once I'm done I just throw out all the boxes, and I kept all my products in this amazing box that I got from one of my brand in past. So I used to keep all my newly bought makeup and everything on this बॉक्स. सो यस, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवील पार्ट, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है. और ये जो वीडियो है इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि दीदी आप प्लीज हिंदी में भी बात किया करो ताकि हमें समझ में आ जाए. तो चलिए शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है. इस बार नायका सुपर सेवर समर सेल से मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया है, पर फिर भी मैंने वही चीजें लिया है जो मुझे बहुत चाहिए था, और आई वॉज आइंग ऑन दोज प्रोडक्ट फ्रॉम प्रिटी लॉन्ग टाइम, पर मैंने लिया नहीं था क्योंकि आइदर द प्राइस इज लिटिल बिट टू मच मुझे लगता है, एंड आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर अ सेल ताकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे विश लिस्ट में है वो मैं कुछ डिस्काउंट में खरीद दूँ. सो फर्स्ट जो मैं ब्रांड दिखाने वाली हूँ वो वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है when it comes about eyelashes, brushes, क्योंकि इसके जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, और whether you are a makeup artist or you just a beginner, you can use their lashes and their makeup brushes because they are very affordable with the quality you are getting. I guess बहुत लोगों को already समझ में आ गया है कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ. Yes, I'm talking about PAC Cosmetics. So PAC Cosmetics was having 10% discount in their product. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 10% डिस्काउंट तो दे रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रांड तो कभी डिस्काउंट देते ही नहीं है इन देयर वेबसाइट ऑल्सो, एंड नायका वॉज गिविंग दैट 10% डिस्काउंट. तो मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग कर ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने पैक कॉस्मेटिक्स से वही सारे सामान लिया है जो मुझे चाहिए था मेरे पर्सनल यूज के लिए और मेरे मेकअप किट के लिए. यस, मैं बहुत जल्द ऑनलाइन मेकअप क्लासेस शुरू करने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई ब्राइडल थिंग ऑल्सो. तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा स्टॉकअप कर लेते हैं, क्योंकि मेकअप ब्रशेस कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, और सेम विद गोज विद द फॉल्स आई लैशेज. तो ये चलिए मैंने बहुत बकबक कर लिया है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ब्रशेस लिया है. तो फर्स्ट जो मैंने लिया है वो है पैक कॉस्मेटिक्स के आई सीरीज मेकअप ब्रशेस. तो ये जो आई सीरीज मेकअप ब्रश है ये मैंने अपने किट के लिए लिया है, जस्ट बिकॉज दैट आई ऑलरेडी हैव मेनी मेकअप ब्रशेस फॉर माई सेल्फ, लेकिन मेरे मेकअप किट के लिए कुछ चाहिए था जो कि मैं मतलब एकदम इंटैक्ट हो, मतलब जो एक मेकअप पाउच के साथ आता है ताकि वो इजी टू कैरी हो जब भी मैं ट्रैवल करूँ, बिकॉज व्हेन इट कम्स अबाउट ब्राइडल यू हैव टू कैरी द मेकअप. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पैक कॉस्मेटिक्स के आई सीरीज ब्रशेस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है. आई मीन पीपल आर प्रेजिंग देयर मेकअप ब्रशेस, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई गिव इट अ ट्राई. और इस पे भी 10% डिस्काउंट था, तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं क्योंकि मुझे तो लेना ही था, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट इट. इसका जो प्राइस है ये है 2925, और इसमें है ये 8 ब्रशेस. तो मैंने ये सील आधा खोल के रखा है ताकि मैं आपको ये प्राइस बता सकती हूँ, क्योंकि वंस आई जस्ट ओपन दिस प्लास्टिक दिस प्राइस टैग विल बी गॉन. तो मैंने सोचा कि चलो फेंकने से पहले एटलीस्ट वीडियो में तो एक बार बोल दूं कि इसका प्राइस क्या है, अदरवाइज आई हैड टू लुक आउट फॉर द प्राइसेस देन. तो 2925 पे 10% डिस्काउंट था. तो चलिए अब मैं ब्रशेज आपको दिखाती हूँ. तो ये जो ब्रशेज है ना ये बहुत ही लग्जरियस पैकेजिंग में आते हैं. ये देखिए, आई रियली लाइक दिस पाउच. ये मेकअप ब्रश एक बैग में आते हैं, तो दिस इज द बैग. So you are getting one pouch additional and this makeup bag. तो अब मैं इसको खोलती हूँ. These are all the brushes. I hope you can see.
सो ये सारे के सारे ओनली आई ब्रशेज ही है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे फेस ब्रशेज भी मिलेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्रशेज इज जस्ट दैट दे कम्स अप विद दिस मेकअप पाउच। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू जस्ट कैरी दिस वन पाउच एंड यू विल बी डन फॉर योर आई मेकअप। मतलब आप यही एक पाउच और विद दिस ब्रशेज आप लेके कहीं पे भी चले जाओ एंड यू कैन डू एनी काइंड ऑफ आई मेकअप लुक, क्योंकि इसमें वो सारे एसेंशियल मेकअप ब्रशेज है जो आपको चाहिए होगा एक बेसिक आई मेकअप के लिए। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डील। एंड अगर आपको 10% ना भी डिस्काउंट मिले तो भी मैं कहूंगी कि यू शुड ग्रैब दिस पैक आई सीरीज ब्रश, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हो या आप प्रो हो, इन बोथ वेज दिस ब्रशेज आर वेरी यूजफुल। और पैक के जो ब्रशेज है ये मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ एंड लेट मी टेल यू देयर इज हार्डली एनी शेडिंग बिकॉज आई यूज टू वॉश माई मेकअप ब्रशेज एटलीस्ट वंस अ वीक। इसका मैंने वीडियो भी डाल चुकी हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मिस किया है देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल लिंक डाउन बिलो ऑफ दैट video. So yes, this is the first purchase from PAC Cosmetics. Moving on to the next product from PAC Cosmetics and that is their false eyelashes. मुझे याद है जब से मैंने false eyelashes use करना शुरू किया है तभी से I am using PAC Cosmetics only. I think this is only one brand that have some affordable false eyelashes. मतलब अगर आपको 200 में चाहिए तो भी इसमें है, अगर आपको इससे better quality या heavy false eyelashes चाहिए होगा तो भी आपको इसी में ही मिल जाएंगे. So I pick 3 different eyelashes this time and let me tell you these are little bit professional kind of eyelashes. आप generally ये eyelashes use नहीं कर सकते. I mean it will look little bit dramatic kind of. ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे YouTube videos में मुझे चाहिए होता है कभी कभी कुछ dramatic eye look के लिए I need some dramatic eyelashes. These are little bit costly eyelashes. So when PAC was having that discount तो तभी मैंने सोचा कि चलो अभी ले लेते हैं, otherwise I will never be able to grab these lashes. This one is PAC M79 and this one is price rupees 375. Although अगर आप सही तरीके से false eyelashes को maintain करते हो you can wear it like 15 times. So definitely I am going to maintain these false eyelashes ताकि मुझे और ज़्यादा खरीदना ना पड़े because this kind of lashes I never wear in my real life. I just wear it in front of camera. दूसरा जो है ये है PAC Pro 05. इसका भी प्राइस है 375 and the next one is PAC Silk eyelashes. ये सबसे कॉस्टली eyelashes है. This one is 415 rupees. Can you just imagine? So yes, these are the 3 eyelashes that I bought during sale. Moving on to another product from PAC Cosmetics and it is their super brow product. तो इसका जो प्राइस है ये है 785 और ये है शेड नंबर 01. ये एक्चुअली आईब्रो पैलेट है और ये 2 शेड्स में आते हैं 01 and 02. I took the shade 01 as when I was training from the Lakme Academy I saw them using this PAC palette and I was really impressed with the quality of this eyebrow palette, so I just bought it. So ये है shade number 01. It comes up with a dual ended brush which one side is eyebrow brush and the other one is pulley and these are the shades. Can you just see? Now these 2 are cream eyebrow shades and these 2 are powder. So this palette is actually very good for people mostly who are professional one because you need to create that defined kind of eyebrows on your brides or on your client or sometime on yourself. So I think this palette is really good for them. Now moving on to the brushes. जो brushes मैंने लिया है वो भी PAC Cosmetics से है और ये सारे brushes मुझे चाहिए थे मेरे makeup kit के लिए. So this is a blush brush that I bought from PAC Cosmetics. This one is price rupees 545 and this one is the brush and the number of this blush brush is 302. Next I bought this highlighter brush from PAC Cosmetics. This one is price rupees 595 and this is the highlighter brush which is number 095. Next this one is the foundation brush of PAC which is number as 072 and this one is price rupees 545. The last brush that I bought is the contouring brush all from PAC Cosmetics और इसका जो प्राइस है ये है 535. तो ये सारे जो ब्रशेस है ये ऐसे सिंगल्स में ऐसे आते हैं. तो ये है सारे 4 ब्रशेस दैट आई बॉट. ऑल दिस ब्रशेस वर आल्सो ऑन डिस्काउंट तभी मैंने लिया है. दीज आर ऑल माय 4 एसेंशियल फेस
brush that I am going to need for my makeup kit. और ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ because you know makeup brushes they are actually very boring to show. So yes, now moving on to the next product pretty fast. Next I took this mini puff and this big one just for my makeup kit, you know, for makeup purpose. And yes, I took 2 mini blender from PAC Cosmetics. I never tried out any mini blender from PAC, so I just thought to try them out. And yes, these are also on discount. Then I bought 2 PAC lash glue, and these are actually one of my go-to lash glue. I always use this PAC Cosmetics lash glue. This is how the lash glue look like. These are priced ₹450 each. क्योंकि मैंने इतने सारे सब कुछ लिया है तो कुछ ना कुछ फ्री तो मुझे मिलेंगे ही. So I got PAC Cosmetics Coffee Snap Revitalizing Eye Cream, which I'm going to use as an eye base before I use concealer. And another one I got free is their Steel Wheel Liquid Eyeliner. It is in shade gold. I just want to show you this eyeliner. It is not that usual eyeliner. It is very unique and it is very funny, you know. It comes up in this kind of wheel. Can you just see the wheel? I hope you can see. Okay, now let me show you the color. So this is how the Steel Wheel liner of PAC Cosmetics look like. This is in shade gold. It look really pretty on eyelid and I got it as a free. So yes, these are all the stuff that I bought from PAC Cosmetics. Now moving on to the lipstick part, which is one of my favorite part. और वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने वाली हूँ क्योंकि I don't want this video to be too long कि आप बोर हो जाओ and then you just leave this video. So yes, let me show you those lipstick. So the first lipstick that I'm going to show you is from the Balm Meet Matte Hues, and the reason of buying this liquid lipstick is just because there was some offer going on Nykaa जहाँ पे आप कुछ भी खरीदो मतलब above 500 होना चाहिए and you are going to get a full size eyeshadow palette. So at first the free eyeshadow was nude eyeshadow, but by the time जब मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर किया तब वो न्यूड eyeshadow खत्म हो चुका था और that's why they gave this nude eyeshadow. So basically I got this full size eyeshadow palette free on this when I shop this Balm Liquid Matte lipstick, और वो भी डिस्काउंट में because this one was costing like 700 something 713 something. तो वो आई शेडो के लिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया है because whenever I will create any look I will definitely going to use that eyeshadow and this lipstick together. So yes, this is the lipstick. The name of this lipstick is Chivalrous. I hope I'm pronouncing right, and this is the lipstick color. And this one is claimed to be the matte one. I have never tried out any Balm Liquid Matte lipstick, so this is the first time I'm going to use it, and this is the first time that I'm swatching this lip color. ये तो ऐसे ही पड़ा था मेरे box में because I was about to shoot this video, so I haven't used this liquid lipstick. So yes, this is the swatch of this lipstick Chivalrous. अब दिखाती हूँ मैं eyeshadow palette जो कि मुझे free मिला है, and only because of this eyeshadow palette I bought this lipstick. So yes, this is the nude eyeshadow. Comes up with a mirror and it comes up with a dual ended brush, and this is how the eyeshadow palette look like. Okay, now the down point of this, जो कि मुझे पता था पहले से ही because it happened every time and so many people are complaining about Nykaa. It's just that whenever they give free product, that either should be near to expiry or the quality of those product is not so good. So when I received this eyeshadow palette, I just saw that it is going to expire by next year. Yes, I knew that this is going to be happen, but still I ordered it. It's just because that I am a blogger and YouTuber, and now I am a makeup artist also, and I have started using eyeshadow palette from 5-6 years back. I am using so many eyeshadow palette from past 5-6 years. तो उसी से मैं कह सकती हूँ, और अब तो मैं makeup artist हूँ. If you maintain your eyeshadow palette with proper hygiene, you can use this eyeshadow palette for like 10 years even after expiry, until and unless your eyeshadow palette shows some fungus or it smell bad, then you need to discard those eyeshadow palette. अगर इसका जो क्वालिटी है वो एकदम इंटैक्ट रहता है, अगर इसमें से कोई बैड स्मेल ना आए और इसमें कोई भी फंगस जैसा कुछ भी ना हो, that eyeshadow is definitely very safe to use it on your eyes. Definitely I would say that अगर आप ये eyeshadow 3-4 लोगों के ऊपर यूज कर रहे हो, then it might be little bit
risky अगर ये expire हो जाता है तो, because at that time you had to maintain the hygiene of this eyeshadow more. और आपको क्या है ना कि तब disposable eyeshadow brushes use करना ही बेहतर है, because whenever you are using this same palette on 2-3 persons तो germs फैलने का ज़्यादा chances होते हैं. But if you are using this eyeshadow palette for only for yourself, then definitely you can use it without thinking twice. हाँ ये तो expire होगा, अब I need to throw it out. Not like that, until and unless your eyeshadow smells bad, or you can use them easily. So yes, this is my 2 cent tips regarding this eyeshadow palette. Yeah, now moving on to the next part pretty fast. So Maybelline पे was like huge discount was going on. There were like 35% discount on their lipstick. और Maybelline के जो Super Stay Matte Ink liquid lipstick range है, that is one of my favorite liquid lipstick range, and that's why I thought to grab few lipstick from those range. I bought this 6 Maybelline Super Stay Matte Ink liquid lipstick. I bought 3 liquid lipstick from their coffee edition and 3 shades from their Super Stay Matte Ink range. So the reason of buying 3 lipstick from their coffee edition is just because that when I was looking that कौन से color के lipstick I have, and I find out that most of my lipsticks are either pink or red or violet और बॉबी पिंक समथिंग, उसमें तो न्यूड और न्यूट्रल्स है ही नहीं. सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट दिस टाइम आई शॉप फॉर समथिंग न्यूड, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई ट्राई आउट Maybelline coffee edition, because I heard so many good reviews regarding this liquid lipstick, पर कभी chance नहीं मिला था to try them out, and when there was like huge sale on this limited edition liquid lipstick, I thought to grab them. So these 3 are also from the newly launched in their Super Stay Matte Ink liquid lipstick, and that's why I just thought that I should try them out, because this is one of my favorite range of liquid lipstick. And the best part is just that these are like transfer proof, smudge proof, and they just stays like 12 hours. So yes, these are the lipstick that I bought from Maybelline Cosmetics. The next range of lipstick that I bought is from Lakme. Now we all know that Lakme is one of the most oldest brand. I mean मेरे बचपन से I am using Lakme, so I have a very soft corner for this brand, and recently they launched their mini version of Lakme Absolute Matte Melt liquid lipstick. So I just bought 5 of them from this range. And yes, there was some offer also going on Nykaa, where if you grab 3 of this mini matte melt liquid lipstick from Lakme, then you had to pay only $9.99, so whereas each are priced like $400. So I bought these 3 on the offer, and 2 I just got it like so. These are all the 5 shades that I bought, but definitely I'm going to share all the shades in the detailed video. I'm going to swatch all these lipsticks all together. Now moving on to the last product that I bought from Nykaa Super Saver Summer Sale, Inglot Duraline. So the price of this Inglot Duraline is ₹1500, but as there was some sale going on where this Duraline was priced ₹1100, so I just thought to grab this Duraline, because the first one that I'm using is almost to the end, because I'm using this Duraline a lot for my liquid lipstick that just dried out. So yes, I just love this Duraline. It is such a great product जो आप यूज कर सकते हो आपके आई शेडोज के लिए और लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए जो ड्राई हो चुके हैं. एंड यस, मैंने एक वीडियो भी किया है जहाँ पे आई शो दैट हाउ यू कैन सेव योर dried out liquid lipstick by using this Inglot Duraline. So if you have missed that video, then don't forget to check out my description box. I will leave down the link of that video so that you can check out that video. That is a very useful one, and that is the reason that my first Inglot Duraline is almost to the end, and that's why I had to bought this one. These are all the products that I shop from Nykaa Super Saver Summer Sale, and yes, these are quite a lot product, and I will start shooting videos regarding this product one by one very soon. Yes, I hope you like this video and find it helpful. Do comment below in the comment section and let me know कौन सा प्रोडक्ट के वीडियो आप पहले देखना चाहते हो, या फिर if you have anything to ask regarding this video or anything you want me to show in my next video, then do comment below in the comment section and let me know. I am signing off with a promise to be back in another video pretty soon. Until then, stay beautiful and stay stylish. Bye.